Good morning. This is Kiran Bakotra. Welcome to our next lecture. I hope you all are safe at your home. Now we discuss about the today's topic of Kinesi family. First of all, we discuss about the systematic position according to Bentham and Hooker classification. Kingdom Plantae, division Spermatophyta, class Monocotyledons, series Apigae and family Canaceae. In this systematic position, we discuss about their characteristic history. The kingdom Plantae in this the autotrophic mode of nutrition because they have a chlorophyll and so they make a oven food. Then the cell wall is made up of cellulose, उसकी cell wall है वो cellulose वाले मटेरियल की बनेली होती है. Then no locomotion, only movement, occurrence of the plant. Then division Spermatophyta. In this Spermatophyta, the flower produce the plant during their whole life cycle. The sex organ are multicellular and after the fertilization the ovule turns to seed यानी कि seed का formation होता है and then also formation of the embryo. Then a class monocotyledon, only one cotyledon is present so it's known as the monocotyledon. Then the venation is a parallel in the leaves. They are a parallel यानी कि they are a straight arrangement in a leaves. Then the flower are generally trimerous and a root is a fibrous root. Fibrous means they are a fiber-like structure arrangement. Then the series is a apigae. In this the plant is a mostly herb or shrub कि उसके जो plant है उसकी height छोटी यानी कि और मीडियम साइज की है. उसमें ट्री प्लांट है वो एब्सेंट है. जनरली दे आर हर्ब और शब प्लांट. देन द स्टेम इज अ अंडरग्राउंड कि उसके जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड यानी कि सॉइल के अंदर के पोर्शन में है. देन द लीव्स आर सिंपल कैल्यून और रामस. उसके जो लीफ है वो मोस्ट ऑफली सिंपल और कैल्यून है. कैल्यून इट मीन्स के they are growing on the stem, especially on the upper part of the stem, so it is known as the calione leaf. Then the petaloid is a perianth. Generally perianth is a two part, sepaloid and petaloid. So petaloid means the perianth yani ki tepals they are connected with the petals. Then the ovary is a inferior. Next the family Canaceae. The Canaceae or Cana family is a monotypic family. It means they are a monocotyledon family. They consist of only single genus, the Cana, with 16 species. The original home of the Cana is a tropical and subtropical America. It means कि जो Canaceae family है वो single genus species containing है कि जो genus Cana है उसकी 16 species only है वो present in this family and they are mostly grow in the tropical and subtropical area. The one species of the Carina bidentata is a tropical African. Then the Cana indica is a favorite garden plant cultivated in most all part of the world. They are mostly in our India cultivated as a garden plant and they are most of red and yellow color plant. Then first is a vegetative character. In this the habitat is a perennial herb and large or coarse. It means the perennial herb means they are survive for several years. The plant are usually bears the flower and fruit every year and they do not die after producing flower. It means कि उसकी लाइफ साइकिल है वो 1 ईयर में कंप्लीट नहीं होती है बट इन एवरी ईयर उसमें फ्रूट और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है. देन दिस साइकिल इज अ कंटिन्यूअस ग्रोइंग. दे डू नॉट डाई आफ्टर द प्रोड्यूसिंग ऑफ फ्लावर. देन द रूट इज अ adventitious root. It means कि the root are developing from the any part of the plant except the radicle के radicle के छोड़ के उसके plant के जो भी parts है उसमें से root का formation होता है उसे हम adventitious root कहते हैं. Then the stem is a rhizome or rarely tuberous and the underground के most of the plant है उसका stem underground है but they are a
समटाइम है ट्यूबेरस के उसके अंडरग्राउंड पार्ट में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसे हम ट्यूबेरस कहते हैं। देन लीफ, तो द लीफ आर लार्ज coiling foliaceous alternate mostly oblong to broadly elliptical distinct differentiated into sheath petiole and blade। इट मीन्स कि उसके लीफ की साइज है वो ज़्यादातर सभी प्लांट है उससे से उसकी लीफ की साइज ज़्यादातर बड़ी है इसलिए नोन एज द लार्ज लीफ। देन कैल्यून लीफ, कैल्यून लीफ मीन्स द स्पेशली ऑफ द लीफ द ग्रोइंग ऑन स्टेम स्पेशली ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, के स्टेम के अपर पोर्शन में है से ही लीफ का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कैल्यून लीफ कहते हैं। देन द फॉलिशियस, फॉलिशियस मीन द जो लीफ है वो ग्रीन कलर के होते हैं और दे आर मॉडिफाइड टू लीफ सच एज अ पेटल, ब्रैक्ट और स्कैल। Then the sap is a elliptical, it means the leaf shape is like a ellipse, it means they are a length increase but the leaf are greater than their the breadth, कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रॉडनेस है उससे उसकी लेंथ ज़्यादातर लॉन्ग है तो उसे हम एलिप्टिकल लेंथ कहते हैं। देन देयर आर अरेंजमेंट ऑफ द लीफ, देन floral character, the first one is in reinflorescence, they are racemose or panicle. So the racemose flower, it means the main axis are converted into the flower and they are also flower arise on the peduncle portion. Then the flower has a large showy hermaphrodite bracted short pediculate पेडिकुलेट, इरेगुलर और जाइगोमॉर्फिक और एपिगैनस, कि उसके फ्लावर की साइज है वो लार्ज है एंड दे आर हर्मेफोरोडाइट, इट मीन्स बाइसेक्सुअल। देन ब्रैक्ट आर प्रेजेंट, देन शॉर्ट पेडिसिलेट, कि फ्लावर के नीचे के जो पेडिकल पोर्शन है वो शॉर्ट अरेंजमेंट है, सो इट नोज शॉर्ट पेडिसिलेट। देन द इरेगुलर और जाइगोमॉर्फिक, तो दे आर not a symmetrical are same but they are they symmetrical are irregular, so known as the zygomorphic. Then epigynous, it means the ovary is inferior. Then calyx, so in this the sepals are number of 3 polysepalous and imbricate estivation, कि उसमें sepals है वो generally they are flower are tetramer, so the sepals are 3 in number, they are polysepalous means they are not fused together but they are arrangement in a free and persist, it means the estivation is a imbricate. If the one calyx, it means the one sepals are external and one sepals are internal, and the remember third is in this one portion are internal and one portion are external. Next the corolla are same to the calyx but their number is a changes. If the petals are large in size, they are number of 5 but they are connected the base portion, so it known as the पेटलोइड, कि जनरली पेटल है वो कोई भी फ्लावर है उसके लोअर पोर्शन है वहाँ से कनेक्टेड है, सो इसलिए नोन, सो इट्स नोन एज द पेटलोइड। द एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट, सो द वन पेटल्स आर इंटरनल, वन पेटल्स आर एक्सटर्नल, एंड द रिमेंबर 3 दे आर पार्शली इंटरनल एंड एक्सटर्नल अरेंजमेंट। देन एंड्रोशियम, तो जनरली द एंड्रोशियम इज हाईली मॉडिफाइड एंड कंपेरिजन द सोवी पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, तो जनरली उसमें क्या है कि इसके स्टेम क्या है, तो स्टेमन इज अ 6 बट समटाइम रिड्यूस टू 4, कि उसमें जनरली 6 स्टेमन प्रेजेंट है बट दे समटाइम्स दे रिड्यूस टू स्टेमन एंड दे आर प्रेजेंट इन 4 नंबर। जब 6 और 4 स्टेमन होते हैं तो उसकी अरेंजमेंट 2 वॉल में होती है, कि ओनली वन एंथर लॉब ऑफ द स्टेमन, द पोस्टीरियर ऑफ द इनर वॉल इज द फर्टाइल, कि उसमें एक एंथर है वो कहाँ पे अरेंज होती है, तो क्या वो सेंटर पोस्टीरियर इनर वॉल में होती है, उसे हम क्या कहेंगे फर्टाइल लोब। द अनदर एंथर लोब आर लॉन्ग विद द फिलामेंट बिकम अ पेटलोइड, कि जो अनदर यानी कि जो दूसरे एंथर है एंथर लोब वो क्या पे है, तो क्या वो पेटलोइड यानी कि जो पेटल्स कनेक्टेड है लोअर पोर्शन पे वहाँ पे अटैच होगी। देन द अदर 2 स्टेमन of the inner wall are connected to form a curved petaloid staminoid, and the wall, the stamen is a 2 lateral ones, they modify into petaloid staminoid, कि उसमें मोस्ट ऑफ 6 और 4 स्टेमन प्रेजेंट है बट उनकी अरेंजमेंट है वो इंटरनल और पोस्टीरियर डिफरेंट है, उसकी अरेंजमेंट हम फ्लोरल डायग्राम में देखेंगे। देन गाइनोशियम, तो गाइनोशियम इट मीन्स द ट्राइकार्पेलरी syncarpus inferior trilocular multiovulate axial placentation, in each ovary
members in a two series and style flattened and petalous कि जो उसकी जो गाइनोशियम है वो जनरली सेंकार्पस यानी कि फ्यूज टुगेदर है, बट दे आर अ ट्राइकार्परिक, उसमें 3 कार्पेल प्रेजेंट है. देन इंफीरियर इट मीन्स द ओवरी आर इंफीरियर एपिगाइनस. देन अ ट्राइलोक्यूलर कि उसमें 3 चैम्बर प्रेजेंट है. द ओव्यूल इज अ मल्टीलोक्यूलर, इट मीन्स दे आर अ more than one ovule are present. The placentation is a axial placentation and the style is a flatted यानी कि broad structure and they are connected with the petaloid. Next, the fruit is a capsule type. This is the floral formula and floral diagram of the Canna indica. In this figure we saw this, the leaf are connected at the stem portion, so it is known as the Caliune leaf. Then the leaf are broad and the venation is a parallel venation. They are the flower. The flower are generally large in size. They are the fruit. They are capsule type. In this floral formula, the bracts are present. Then they are zygomorphic. Then a bisexual. Then in this the calyx are 3 in number and they are polysepalous. Then corolla are also 3, but in some plant they are 5 in number and they are polypetalous. The anther are variation 4 to 6. The ovary is a tricarpellary syncarpus and they are inferior, so the underline above the G. On this floral formula we write down the floral diagram. Okay. First of all, they are a bract portion, we know as the BR. Then the sepals, number of 3, so the 1, 2 and 3, they are sepals arrangement of the imbricate. Then the petals are 1, 2 and 3, also petals are 3 in number in Canaceae family. They are gamopetalous fused together, estivation is also imbricate. But in the lower portion they are a petaloid stamen, it is known as the petaloid stamen arrangement. देन दे आर अ कर्व्ड स्टेमिनोइड कि उसके अंदर जो स्टेमिनोइड यानी कि जो एंथर है वो पेटल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उसे हम पेटल स्टेमिनोइड कहते हैं. तो उसका कर्व्ड शेप है, तो वो 2 अरेंजमेंट है, वो इंटरनल पोस्टीरियर अरेंजमेंट है, तो उसे हम कर्व्ड कहते हैं. देन द वन इज अ फर्टाइल स्टेमन with one half other, the one half other is in this and one half other that, so they are a fertile stamen. And in this center portion they are a tricarpellary ovary axial placentation, and in this the many ovule are present. So this is a diagram of the Canna indica. They are in this figure the Canna indica plant, they are a yellow color. Then next is the Canna indica and this is the radar color. So in this lecture we completed the monocotyledons family of Canaceae family, and also we completed in our family the monocot and dicot family. In this monocot we study the 13 family, in the polypetally are 5 family included, then the gamopetally in this also 5 family included, and then the monoclamidae the 3 family included, then a monocotyledons in the 2 family included. So in our syllabus the 15 family are completed in our today's lecture. Thank you.